نیست در خشک و در بیشه من کوتاهی چو بر نخل کی منبر نشد دار کنم. Sufism has been one of my favorite readings nowadays. इकबाल की اسرار خودی द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ जैसे इसको रोनाल्ड निकलसन ने इसको ट्रांसलेट किया है. This is a poem on Sufism. I would say this is a treatise on Sufism. Sufism की एक रूह है इस बुक के अंदर, इस पोएम के अंदर. एक तसव्वुफ की एक झलक है, एक रूह है. इकबाल अपना जो फ़लसफ़ा खुदी है उसको बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश करते हैं. इसमें सबसे पहले बताते हैं कि द सेल्फ इज़ स्ट्रेंथन्ड बाय लव. आई विश कि मुझे ओरिजिनल पर्शियन आती तो मैं उसको ओरिजिनल पोएम पढ़ लेता. But I'm trying to learn Persian to get the original jinx and original soul of the poem. Although ये एक translation है, लेकिन this is a wonderful translation. सबसे पहले कहते हैं कि self is strengthened by love, self is weakened by asking, and then he says, showing that education of the self has 3 stages. सेल्फ की एजुकेशन सबसे पहले बताते हैं कि लव से इट स्ट्रेंथन्स एंड बाय आस्किंग यानी गदागरी से, मांगने से इट आपकी खुदी कमज़ोर हो जाती है. आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कमज़ोर हो जाती है. और फिर कहते हैं कि इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए. सबसे पहले ओबीडियंस. इट गोज़ बियॉन्ड द मंडैनिटी, इट गोज़ टू द डिवाइन विसर्जेंस. Like obedience, if we start from the worldly obedience, for example, if you love someone, the obedience means following the person you are loving, right? And in a higher level, in a divinity, in a love with God, and in a love with Allah and whoever you find the creator of the universe. सबसे पहले obedience बहुत important है. उसके बाद self control. The next very important thing is self control. In Islamic treatise, Islamic faith, it is given different meanings as well. नफ्स कहा गया है इसको, नफ्स कहा गया है. इसकी खूबसूरत तरीन डेफिनेशन गज़ाली ने की है, इमाम गज़ाली ने. और कुरान में डिफरेंट तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया है. जैसे नफ्सुल अम्मारा कहा है, नफ्सुल लवामा कहा है, और नफ्सुल मुतमइन्ना कहा है. इट इज़ समथिंग वेरी प्योर, यू नो. सेल्फ कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए. टू कंट्रोल ऑन द सेल्फ वी मस्ट गो थ्रू ओबीडियंस. और उसके बाद तीसरा लेवल जो आता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेवल, व्हिच इकबाल सेज दैट दिस इज़ डिवाइन विसर्जेंस. एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अंडरस्टैंडिंग गॉड, राइट, फॉलोइंग गॉड. और दूसरा ये होता है कि यू जस्ट अंडरस्टैंड गॉड इन इट्स एसेंस एंड इबादत करो तो ऐसे कि जैसे उसका हक है, उसका हक है. God is the one who needs to be understood, who needs to be followed. उसका हक है. इसलिए मत करो इबादत कि दिस इज़ इनकम्बेंट अपॉन यू, आपके ऊपर फ़र्ज़ है, या आपने करना है. ये कर्ज़ नहीं है, इबादत कर्ज़ नहीं है. इकबाल के हिसाब से इकबाल कहते हैं कि इबादत ऐसे करो, इट्स ए डिवाइन विसर्जेंस. ऐसे करो कि ये उसका हक है जिसकी तुम इबादत करते हो. सो ओबीडियंस है, सेल्फ कंट्रोल है, और उसके बाद डिवाइन विसर्जेंस है. लेट मी रीड सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने इस बुक को पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छी लगी एंड मैंने बुकमार्क की हैं उनको, तो मैं उनको ज़रा एक बार रीड कर लेता हूँ. यू विल अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज़ ओबीडियंस. Service and toil are traits of the camel. Patience and perseverance are the ways of the camel. Noiselessly he steps along the sandy tracks. He is the ship of those who voyage in the desert. Every thicket knows the print of this foot.
he eats seldom, sleeps little. He carries rider, baggage, and litter. O heedless one, liberty is the fruit of compulsion. This is the most beautiful line. Liberty is the fruit of compulsion. By obedience, the man of no worth is made worthy. आप सुने इकबाल को. By obedience, the man of no worth is made worthy. मानना, obedient होना, फरमाबरदार होना, उससे क्या होता है? एक worthless बंदा जैसे we are the worthless people. If we follow someone, we are known by the person or the divine entity we are following. By disobedience, his fire is turned to ashes. By disobedience, अपने मरकज़ से अगर दूर चले जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे. That's how it works. If you don't follow someone, if you don't follow the thing, Sufism is, by the way, all about following. It is very different than इज्तिहाद. इज्तिहाद में रैशनल माइंड यूज़ किया जाता है. फॉलोइंग और तकलीद को बहुत ही कम फोकस किया जाता है इज्तिहाद में, जबकि सूफीज़म के अंदर द एसेंस ऑफ सूफीज़म इज़ फॉलोइंग एंड ओबीडियंस. If you are following your peer, if you are following God, if you are following your lover, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, this is the most important thing that you are following. सबसे पहली चीज़ है obedience, that you follow the person. और उसके बाद है self control. Self control कैसे आता है? Let's say you love someone, you follow the person, right? In their good or bad, in their right and wrong. और उसके बाद सेल्फ कंट्रोल हासिल करते हैं. इवन इन द वर्स्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ यू कंट्रोल योर सेल्फ, यू कंट्रोल योर एंगर, यू कंट्रोल योर एंजाइटीज, यू कंट्रोल योर डिप्रेशन, एंड यू कंट्रोल एवरीथिंग. और उसके बाद क्या है? डिवाइन विसर्जेंस. अब ये इश्क हकीकी की तरफ पहुंचा देता है इकबाल इसको. कहता है कि उसको ऐसे उसकी इबादत कर लो, ऐसे उसको फॉलो करो कि जैसे उसका हक है. इश्क मजाजी लेके चलता है इश्क हकीकी की तरफ. सो सूफीज़म इज़ ऑल अबाउट फॉलोइंग फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स. जैसे आपका पीर है, आपकी मोहब्बत है, आपका इश्क है, वहाँ से आपको खुदा की तरफ लेके जाता है. दैट्स सूफीज़म, दैट्स वेरी स्पिरिचुअल. आगे कहता है, Whoso would master the sun and stars, let him make himself a prisoner of law. The air becomes fragrant, then it is imprisoned in the flower bud. The perfume becomes musk when it is confined in the navel of the musketeer. हर चीज़ की एक जगह होती है. वो परफ्यूम जो अगर वो हिरन के मशकीज़े में होती है तो वो मुश्क कहलाती है, हालांकि उसकी बॉडी का स्वेट है. That becomes मुश्क जब वो उसमें होती है. अदरवाइज किसी और जानवर में हो, दैट इज़ नॉट मुश्क, दैट इज़ द इनफ्रेग्रेंट, व्हाट डू वी कॉल इट, द स्वेट्स, एंड वी डिस्पाइस इट. आगे सेल्फ कंट्रोल में क्या कहते हैं? द सोल केयर्स ओनली फॉर इट सेल्फ लाइक द कैमल. इट इज़ सेल्फ कंसीटेड, सेल्फ गवर्न्ड एंड सेल्फ विल्ड. He that does not command himself becomes a receiver of commands from others. What a beautiful line. He that does not command himself becomes receiver of commands for others. जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता. Person who does not control himself or herself, वो that person is prone to the commands of others. जब आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप you give the way to the people to control you. That's how it works. When they molded thee of clay, love and fear were mingled in thy making. Fear of this world and the world to come, fear of death. कहता है कि जब आपको बनाया गया, जब आपका खमीर बनाया गया, when you were made from the clay, इकबाल says that आपके अंदर खौफ और मोहब्बत दोनों साथ शामिल किए गए थे. Fear and love. A human being is made up of fear and love. कहता है fear of this world and the world to come. जिंदगी का खौफ और मौत का खौफ.
कुछ शायर इसके अगेंस्ट भी बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि ज़िंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो मैं भी हूँ. But it is something that every person fears from the other person. Every person fears from life, the anxieties, the depressions, the problems in the life. They somehow come up in a person. This is the fear of life. And fear of death, किसी दिन हमने मरना है, सबने मरना है. और फिर कहते हैं कि fear of all the pains of earth and heaven. दुनिया और आखिरत के जितने भी गम हैं, आए हैं गम का मदावा कैसे होगा. लव ऑफ द रिचेस एंड पावर, लव ऑफ द कंट्री. अब कहता है कि दुनिया का खौफ, आखिरत का खौफ, मरने का खौफ, दुख हो, परेशानी का खौफ, ये सारी चीज़ें इंसान के इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. और आगे कहते हैं कि लव क्या है. लव ऑफ रिचेस एंड पावर, लव ऑफ कंट्री. ये कंट्रडिक्शन है इकबाल की पोइट्री में. somehow whenever I read Iqbal, I find a lot of contradiction. But let's focus on the secrets of self. Love of riches and power, दौलत की और पावर की तमन्ना. लव ऑफ कंट्री, पैट्रियाटिज्म जिसको आप कहते हैं. लव ऑफ सेल्फ एंड किंडर्ड एंड वाइफ, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए प्यार. मैन इन whom clay is mixed with water is fond of ease. इंसान जो मट्टी से बनाया गया है, चिकनी मट्टी से, is fond of ease. वो आसानी की तमन्ना कर रहा है हमेशा. A man always wants ease, आसानी चाहता है. इकबाल की सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, ये जो बुक है छोटी सी, एक पोएम है. I've read it several times and it is so close to my heart. Last एक चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद we'll close this. Iqbal says that as love fortifies the ego, asking weakens it. All that is achieved without personal effort becomes under swall. The son of a rich man who inherits his father's wealth is an asker, beggar. बहुत ही मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए इकबाल ने. The son of a rich man who inherits his father's wealth is a beggar. Very good. You know what? जिसको कहा जाता है the silver spoon, जो मुंह में लेके पैदा होता है, that person doesn't has to go through a lot of toil in the world. और जिसको फेलियर के बगैर बहुत कुछ मिलता है ना, that doesn't give a lot of goodness to the person. Experience lack करता है ऐसा बंदा. So failure is very important in your life. He says that so is everyone who thinks he thoughts of others. Thus, in order to fortify the ego, we should cultivate love, the power of assimilative action, and avoid all forms of asking. In action, the lesson of assimilative action is given by the life of the Prophet, at least to the Muhammadan. So, this is a very recommendable book if you love Sufism, if you love Iqbal, if you love Persian. अगर आपको फ़ारसी आती है तो इसको ओरिजिनल पढ़ें, नहीं तो रेनल्ड निकलसन की बुक मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन. Go ahead with that. This is a wonderful book. See you another time. Allah Hafiz.